And Sanam, you can start. Namaste. Welcome to Authentic Light Center, Pune, under divine guidance of the great Guru Mahavtar Babaji and his team, and our divine lovely mother Sunita Deviji. So, Masters, this is our Guru's birthday celebration week. November 30th is Babaji's birthday. So, we planned to do little initiatives for this full week. From today to 30th of November, we have interesting activities to dedicate to our great Guru, the Guru of Guru, the teacher of the teachers, the wire puller of 400 Milky Way galaxies, the owner, and Shiva himself, the great Guru. So we have Mahavtar Babaji's, we are dedicating these activities in his lotus feet. So Masters, the first activity we choose today is protection of snakes. So we all know, Masters, how snakes are emotionally connected to our Guru. So Mahavtar Babaji's initial name was Nagaraj. That means Naga. His name has this word snake. We know, Masters, we all of us know the importance of snakes. How important are they in our spiritual development, to our planet Earth, and the environment? So in the spiritual journey, we have symbolized, we know the Kundalini awakening. It symbolizes the snake. We have the very, very important place here. The Kundalini awakening is directly symbolizing us with snake energy, the serpent energy, which is moving from Muladhara to above chakras. Similarly, Masters, in one of the very important channelings, our Sunita Deviji has showed what Babaji has told us, that the snakes are very, very important creations. The very, very important part of the creation. They protect Mother Earth from the negative vibrations. They actively absorb all the negative energy and negative vibrations, and they will emit the golden energy. And they're there for us, for the mankind, for Mother Earth. They're also very helpful in balancing the ecology, the system. So most of us, like, we are still ignorant, Masters. The moment we see the snake, we get scared. And the first thought that comes in our mind is to kill the snake, which is very, very wrong. Masters, this are the very dangerous seeds that were given to us in order to remove this golden energy from the Mother Earth. This is a trap that was injected in each of us, that the moment we see the snake, go hit and kill it. But this is not the truth, Masters. Because when Babaji has guided us today, that please save these snakes, they have the right to live. They have highest rights to live. And please come forward to protect them and educate to our farmer friends, our farmer friend families. Educate them how important they are. They give us in exchange the golden energy, and they're also protecting our Mother Earth. Please kindly welcome Avinash ji. He has kindly came forward from Friends for Snake Society. He's coming from there. So we are in collaborating with the society to bring the awareness, Masters, just to know how important and how they're working to save snakes and rescuing them, their lives, and bringing light. So we have the champion Avinash coming forward to give the beautiful training and letting us know the importance of snake, Nagas. So let us dedicate this and tribute to our Guru, Mahavtar Babaji, and our Divine Mother, Sunita Devi Ma. And let us invite Avinash ji to the session. Avinash ji? Yes, ma'am. Thank you so much. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you so much for giving a wonderful introduction to snakes. In fact, we could not have done as good as you. Right from the cultural significance to the ecological impacts that these snakes have, I think you have summed it up real well.
I will just add on a little bit more information from our end as to how beautiful these animals are, how beautiful these creatures are, and then what kind of role snakes play. I'll also try to bring in parallels as to how the fear is deep rooted in our system. At the same time, I'll also highlight as to why sometimes we fear them. At the same time, okay, uh, why we fear them and why we also revere them at the same time. All of these are things that I will certainly highlight today. If you have any questions towards the end, we will have a question and answer session to cover that aspect also. For the next 45 minutes to 1 hour, please absorb as much information as you can. I will be as slow as possible. Should you have any questions, you can always post it in the chat or ask towards the end. So thank you so much, everyone, for inviting me, and I will quickly share my screen. Perfect. And I will be talking a little bit about the common snakes of India. Now, this session will also help you in your day-to-day life because sometimes there can be snakes that are venomous, and it is best to avoid close contacts. If you are respectful towards snakes, I'm very positive, they would not bite human beings. In fact, they would avoid all kinds of confrontation if given a chance. Today's session is going to be a brief introduction about the snakes that are found in India. I will also share from my experiences as to what's been my journey. And yes, let me begin. So, in across the world, you're aware there are plenty of snakes. There are about 3,700 different species of snakes, of which 10%, roughly 330 different species, are present in India. India is a very beautiful country with diverse species of snakes, right from a small thread snake all the way to a very large 20, 25 feet long python. Okay, they are apex predators in whichever ecosystem that they survive, and you can find them everywhere. You will find them on the land. Sometimes you will find them in water. Sometimes you can spot them on trees, and sometimes underneath the ground. Uh, a little bit intro about ourselves. We are Friends of Snake Society. We are conserving snakes since 1995. We operate mostly in areas of Telangana and Andhra Pradesh. We have a bit of presence in other states also. Every year, our volunteers rescue close to 10,000 snakes, and we relocate them in various forest areas with the help of forest departments. We also conduct awareness sessions like these, and we try to do our bit in kind of introducing these animals to us, to the public. Now, I think you can see these images here where we have a lot of our volunteers in various activities. Here, a member is rescuing a cobra. There, another member is rescuing a python. There are images of our members doing awareness workshops for improved awareness. And from these images, I'm sure you can appreciate that they come in various shapes, they come in various sizes, they come in various colors. They are very beautiful. And today we'll kind of look at each and every one of common species that we usually come across. As I told earlier, there are about 332 different species of snakes in India, and I have presented a statistical overview for your reference. Of the 332 species, a very small portion of the snakes are venomous. The rest of them are non-venomous species that are found. And even in these venomous species, if we further break it down, there are about 21 snakes that live in sea. Now, sea snakes are so docile, so calm beings that fishermen sometimes catch them in their fishing nets. They simply pick these snakes and throw them back in the water. They rarely bite. We'll forget about those 21 snakes. We are left with some 50 snakes. Of these, there are 46 of them, which are either very rare in nature or their venom is not dangerous or potent to kill a human being. Okay. You might have heard about the king cobra. King cobra is the longest growing venomous snake in the world. It grows up to 18 feet in length. But the snake is so rare that if you want to kind of
find a snake, you will have to camp in thick jungles for a month or so. And if you're lucky, you might spot one. And then after that, you'll have to run behind the snake, and bites from them are next to impossible. They are very rare. And then there are these vipers, pit vipers, which have venom to kill, let's say, a lizard or a bird or a rodent, but not potent to kill a human being. We are left with four individuals, which are commonly referred to as the big four venomous snakes of India. These snakes have enough venom to kill a human being. At the same time, they are commonly present. So I would request you all to observe these big four venomous snakes later during my talk and try to recognize them, because invariably, if you are able to recognize these four, the rest can be considered harmless. Now, again, across India, depending on the geography, there are additional venomous species also, but these four snakes are the most common. All right. First, I will talk about the non-venomous species that we come across. You are aware that snakes can be divided broadly into two groups. One group which has venom, the other group which do not have venom. Okay, venomous snakes have a special gland that produces venom, and with the help of venom, they are able to procure their prey. On the other hand, non-venomous snakes, they don't have venom. They resort to other methods, such as overpowering their prey. They have a better muscle mass and things like that. So first, we'll talk about the non-venomous species that do not have any venom. Now, green wine snake or the long-nosed wine snake is one of the common tree snakes that we will come across. I'm sure you must have spotted this in the past or heard about it. It is a snake which is thin and it grows up to 3 feet in length. From the head till the tail, they have this uniform color, green color, and their head also looks very sharp and pointed. Now, people have a lot of myths regarding snakes, and it is better to be aware of all these misconceptions about snakes so that we don't fear them. Now, people say that using this sharp head, the snake will poke you in your eyes, or it can enter the ears and come out. All of these are just stories that people have. In reality, if you just look at the head portion, it looks like a leaf. Okay. This gives the snake an added advantage to camouflage better so that it goes close to its prey. Okay. I have included a few icons here for your reference. This is to kind of show you where you can spot a green wine snake or at what time will these be active and things like that. So green wine snakes are harmless snakes. They are non-venomous, and they are active during the daytime. They are diurnal snakes. Also, they live on trees. Apart from that, they feed on birds, lizards, rodents, and frogs. All right. That is one snake that lives on trees. There's another one called the bronze-backed tree snake. ठीक है, हिंदी में इसे पेड़ों का सांप भी कहते हैं. इनफैक्ट दोनों के दोनों पेड़ों का सांप है, and both of them are non-venomous. जहरहीन सांप है. They do not have any venom whatsoever. Now, the green wine snake was green in color. The bronze-backed tree snake is a brown-colored snake. If you observe closely, from the head till the tail, they have a bronze color line running on its spine. Okay, and that's why the name, the bronze-back tree snake. Bronze-back tree snakes, just like the green vine snakes, are active during the daytime. During the night, they sleep and they live on trees. And they also feed on lizards, frogs, and sometimes small birds. Now, just because it's a non-venomous species doesn't mean that they don't bite. All snakes can bite. They will defend themselves if they are threatened, as you all are aware. But in case of a bite from a non-venomous snake, we need not worry. We need not panic. All we need to do is wash the bite site with clean water, apply antiseptic, and take a tetanus injection, TT shot. That's about it. If it's a venomous snake, there's a separate procedure that we need to follow, and I will definitely discuss about that towards the end. Okay, the bronzeback tree snake. People are scared of the snake. Now, I've told you it's a non-venomous snake, but people believe that it's a very, very dangerous snake. I have heard plenty of stories where people say that this particular species will wait on treetops. If it spots a person walking below on the ground below the snake, it will jump from there, land on the person's head, and kill that person instantly. They also say that the snake will follow the dead man
to the graveyard to confirm if that person is dead or not. It definitely is a big joke, as I've told you earlier. This is a non-venomous species. People need not worry or be scared of these species. The bronze back tree snake, right? And apart from the bronze back tree snake and the green one, there are certain species that live underneath the ground. These are called fossorial animals. Snakes that live underneath the ground are called fossorial animals. And one example would be the common sand boa. Common sand boas grow up to 1.5 feet in length. They are rather round bodied, bulky, heavy snakes. They are rather slow moving animals. Okay. Now, they are active during the night time. Unlike the tree snakes, the common sand boa is active during the night time, as in like one of the most beneficial snakes to have around. Okay. The common sand boa, because it eats other snakes, it controls the population of venomous snakes in that area. And that is why if you spot a common sand boa, do not kill it, do not remove it. Let it stay wherever it is. It is certainly not going to pose any harm. And in return, it is going to control the population of venomous snakes also in that particular area. So that is common sand boa. How do you recognize it? Pretty easy. They have these black patches on the body. Are you all able to notice this? From head till the tail, they have these black patches on the body. Are there any particular shape or patterns that these patches form? No. These are patches which are irregular in nature. There are no circles there are no triangles, they are just irregular blotches on the body. The reason why this is important is there's another dangerous or a venomous snake called the Russell's viper, which also has patches on its body. But then on that one, the patches are regular, they are oval. Okay, here it is just mere irregular blotches. So the snake with irregular blotches on the body, irregular patches on the body, it's a non-venomous species called the common sand boa. All right, let's move on. After the common sand boa, another common species that we come across would be the red sand boa. Red sand boas are non-venomous species. They are active during the night time again and live underneath the ground. People get confused with this snake. Sometimes they refer to it as the two-headed snake. Do muhi samp ya do sir wala samp. Okay. From a distance, yes, it may look like that the snake has got two heads, but in reality, there is only one real head and a blunt tail, which resembles the head. Okay. The tail is blunt and rounded from a distance. It may look like a head, but no, it is just a tail. Why is it like that? There is an ecological reason for it. There is an evolutionary reason for it. This is a very slow moving snake. If a predator, let's say a cat or a dog or some wild animal, tries to hunt this snake, what it will do? It will simply coil and keep its head underneath the coils. Okay, it cannot outrun a predator. It's a very slow moving snake, as I've told you before. So it will make a coil and it will keep its head underneath the coils, and it will use the tail or it will move the tail to distract the animal. The bird or the predator will keep biting the tail, thinking that it is killing the snake, but no, the real head is underneath the coils, and using this shovel shaped head, it will dig itself underneath the ground and escape. That is why it may appear for someone looking at this act from a distance, it may appear that the snake is using two heads, one head to dig, another head to fight with the animal. But no, there are no two-headed snakes in the world. You can have two heads on one side, right? It's a genetic disorder. Even in human beings, you have conjoined twins, but two heads on either ends, not possible. There are a lot of stories, a lot of myths regarding snakes as I've told you earlier. People believe that if you leave this snake in your garden, it will dig itself under the ground and come back with treasure pots. Okay. None of that is true. It is just a myth that people have, right? These snakes do not have any special powers of bringing jewelry. And again, what interest will gold or earthly values serve for a snake, right? It's just a myth that people have. All right. So we've spoken about four snakes till now. Let us look at another one, which is the freshwater snake. It's called the checkered keelback. Now, in India, all the sea snakes are highly venomous. Okay. All the sea snakes are highly venomous. On the other hand, all the freshwater snakes,
snakes that live in lakes, ponds, rivers, paddy fields, sometimes in our drainage or gutter system. All of these are snakes which are harmless. Okay, they do not have any venom. The checkered keelback is called so because of the chessboard-like patterns on its body, right? And checkered keelbacks are usually found in and around water bodies. Sometimes they are found on land also, but invariably you might spot them close to water bodies. They are active both during the daytime and the nighttime. Okay, and they predominantly eat frogs and fish, which you find in water. People here believe that checkered keelbacks are very dangerous. People say that if you get bitten by a checkered keelback, you have to take a glass of water from where the snake was spotted first and drink it. Let's assume you're walking on the road, right, adjacent to a nala. All of a sudden, this snake comes out and it bites you, right? If you listen to people, you'll have to take a glass of that nala water and drink it. And if you ask me, that water can kill you, but the snake bite is harmless. Okay. And then there are few snakes which are probably not common across India. This is one example, the Russell's wolf snake. From a distance, it might look like a very dangerous snake called the crate, but it is not. Remember this, crates are usually black colored snakes and they have white lines on the body. And even these white lines appear in pairs, right? They kind of come, or rather, there are two lines together, there's a gap, and then again you have two lines. That's how a common crate would look. On the other hand, wolf snakes are brown colored snakes, usually brown to dark brown colored snakes with single yellow lines on its body. All right. But if at all you kind of come across a snake that looks like this during the night time, it is better to stay clear. Do not go close to it. It could be a crate, right? And wolf snakes and crate both, they come out during the night time. They both eat lizards. So that's why you should be careful. Another species that is found in central and southern India would be the banded racer. Banded racers are fast moving snakes that are active during the daytime. They are called banded racers because one, because of their speed, and second, you might find these faint bands on their body. That's why they're referred to as the banded racers. Now, people believe that this particular snake can directly drink milk from a cow's udder. Okay, they directly drink milk from cow is what people believe, but it's not true. Snakes do not drink milk. Milk is something that does not get digested to snakes, as you all are aware. So, if at all a snake were to drink a milk, it has to vomit or regurgitate it. Otherwise, it can be dangerous to the animal also. So, a snake drinking milk directly from a cow, that is not true. Okay. Now, banded racers are active, as I told, in the morning hours. They love eating lizards, rodents, and frogs. If you've observed, all the snakes that I'm talking about are usually animals that eat rodents. So you can also appreciate the fact that snakes are doing amazing rodent control for us free of cost. Unlike any other animal, these animals are capable of entering a rodent's burrow and eating rodents from there. There might be kites, eagles, cats, or any other rodent killer, but none of them can be as flexible as a snake and control rodent population for us for free, right? Next, this one is a very common snake. It's called common rat snake, or it's called damin in Hindi. And I'm sorry, this is a non-venomous species that is present across India. They grow up to 9, 10 feet easily, and usually around 6 feet you would kind of come across in cities and major towns. Now they are diurnal animals, as in they are active during the daytime, and they are terrestrial animals. They are animals that are usually found on land. Rat snakes are generalist feeders, which means that they kind of eat anything that they are able to stuff in their mouth. Frogs, rodents, birds, lizards, and other snakes also. So you see, rat snakes control rodent population, yes, but they also control population of venomous snakes in an area. So that's why, if at all you spot this one also, please don't remove it. It's actually doing great good for us. People get confused between rat snakes and cobras because they both are long growing snakes, but I will give you a pointer here. From the mid body till the tail region, rat snakes have these black lines on their bodies, which are absent in cobras in general. And apart from that,
underneath the eye, they have these black lines, which are called tear marks, and these black lines are present only on rat snakes. If at all you kind of come across a snake, which is pretty long, about 6 feet in length, if you're able to see these lines, then it is a non-venomous snake, the rat snake. If there are no lines and if the snake happens to show a hood, then it could be a cobra. Okay. People here still end up killing rat snakes because they say that daman जो है काटता नहीं है, daman दुम से मारता है. As in, the rat snake does not bite you, but it will sting you with the tail. And if you get stung by a rat snake's tail, your hands or legs will swell to the size of a tree trunk or can shrink to the size of your thumb. All of these are myths, again, that people have. You do not have to believe them. Another species would be the Indian rock python. Indian rock pythons are large snakes. They are animals that grow up to 20, 25 feet in length without any difficulty. And people say that, if a python were to, if a python wants to eat you, it will just open its mouth, create a vacuum, and pull everything in. None of that is true. Just like any other snake, they will have to hunt and eat their prey. They cannot create any suction or vacuum as such. Pythons are active during the night time, and as you can imagine by the name, these animals are often found under rock crevices or large burrows on the ground. They have they have a predominant mammalian diet. They start eating rodents. They graduate to bandicoots, and from there they end up eating street dogs or animals of that size. Or in the forest, they also can eat an animal as big as a spotted deer, 30, 40 kg deer they are able to consume. These are large animals. They are large apex predators. In, species that are commonly found. Now, as I've told you earlier, I will be talking about the venomous snakes also of our region, the big four venomous snakes that I initially spoke about. I want you all to pay close attention to the coloration, the size of these animals, and their general habitat preferences, so that you are careful next time whenever you're stepping out. Common kraits are black colored snakes and they have these white lines on the body. There are about 7 or 8 different species of kraits that are found in India, but these are the most common ones that you'd come across. Invariably, if you ever spot a black snake or dark snake during the night time, I would recommend that you stay clear from these snakes, do not go close to them because they could be kraits. Common kraits, as I've told you earlier, have white lines on the body, and these white lines also occur in pairs. Okay, you can see this. There are two bands, and then there's gap, and then again you have two more bands there. Common kraits have strong neurotoxic venom, which affects the nervous system, and if treatment is not taken on time, a person can die of respiratory failure. They are animals which are active during the night time and usually feed on snakes and lizards, and sometimes frogs and rodents. Again, if we don't keep our surroundings clean, we may end up having rodents come, and then in search of rodents, you can also have these snakes come. If you have garbage or if you have materials stored outside, please ensure that you're keeping them at a raised platform. Or if you have to remove these items from the ground, first visually observe and, or if required, prod that material with stick before keeping your hand. Because if you scare a snake, if you startle a snake cannot scold at you, it cannot shout at you. The only thing that it can do is bite in defense. So it is always best that you are careful when you're stepping outside because you may have snakes around. Another species would be the spectacled cobra. In India, there are about 4 species of cobras. South India, Central and South India, you have the spectacled cobra or the nagsam. And in North India, you have another species called the monocled cobra, again the nagsam only, but a monocled cobra with a single circle behind the hood. Okay, this portion is the hood or the neck region of a cobra, and they have elongated ribs which they can open to make themselves look larger than they are. Okay, it's a strategy to kind of scare a threat. Instead of wasting their valuable venom on human beings and other threats, they simply make themselves look larger, and they also hiss
to scare away any threat that they may come across. Cobras are very adaptable animals. They are generalist feeders. They kind of can eat anything that they are able to fit in their mouth, right from rodents to frogs, birds, snakes, bird eggs, lizards, anything that they come across, they are capable of eating. All right. Spectacled cobra is active both during the daytime and nighttime, and they are very, very common snakes in most of the metropolitan cities. Luckily, again, in our region, we rescue about 10,000 snakes in a year, and about 5,000 of them are spectacled cobras. They are that common. And then the Russell's viper. Russell's vipers are venomous species which have strong hemotoxic venom, which can affect the blood cells and the kidneys. They are active during the nighttime and usually feed on rodents and birds. But then it's a good snake. They rarely bite. If at all you come too close to it, they hiss as loud as a pressure cooker. Okay. And then they kind of tell you that I'm here, please do not come close. They are very beautiful animals. As you can see, they have these beautiful chain-like patterns throughout the body. Remember, I've spoken about the common sand boa earlier, which had irregular blotches on the body. On the other hand, the Russell's viper has got regular, oval, symmetrical pattern on their body. That's how you identify a Russell's viper. Another viper that are common would be the soft-scale viper, which are very small animals. They grow up to 1 feet in length. If you go towards Rajasthan, northwestern parts of India, you have another species of soft-scale viper, which grows up to 3 feet in length. Okay, but rest of the India, you have this very small animal, the the common soft-scale viper, which grows up to 1 feet in length. They are also very beautiful snakes, but because they are very small, people may not spot them and accidentally step on them or get too close to it. And that's why bites happen. They are usually active during the nighttime and feed on insects, lizards, sometimes rodents and frogs. Again, easy to identify this particular snake. They have these two parallel zigzag lines running along the body. And whenever these zigzag lines come close, there's a small band or small pattern that forms. Also, on the head, they have a mouse pointer shaped symbol right on the center of the head. Right, I'll repeat again. These are the four species. The common crate, you have again other species of crates across India, but remember this black snake with white lines. Be careful, it could be crate. Then you have the spectacled cobra, uniformed brown color body without any markings on the body, with just a hood if you get too close to it. And then you've got the Russell's viper with regular chain-like pattern throughout the body, and the saw-scale viper, which is a very small venomous species that is found. Now, if you're able to identify these snakes, invariably most areas, the other species that you come across can be considered as non-venomous. Right? Another segment, another portion that I also wanted to talk about, because when it comes to snakes, safety is always paramount. Prevention is better than cure. But in case of snake bites, or if you kind of come across someone who has been bitten by a snake, it is good to know as to what should be done in case of snake bites. Just before that, wanted to talk about this. Snakes are very crucial in our ecosystem. Apart from the cultural significance that these animals bring, they also are very vital in our ecosystem. They control the population of a lot of animals, right from worms to large mammals. They are able to control population of. Simultaneously, there are other animals that rely on snakes as a source of their food. So you see, snakes not just eat other animals, there are animals that also eat snakes. So they are placed in the food web in a place where they are irreplaceable. If snakes are not there in that area, population of a certain group of animals can increase. Let's hypothetically there are snakes in an area, and all of a sudden the snakes are removed from that area. Let's say the frog population explodes, and when frogs explode, frog population explodes, the population of insects can come down. So pollination can be affected. Things like that. That is why snakes are rather very important in our ecosystem. They are also, or there are also plenty of medicines that are derived from snake venom. Medicines to control your blood pressure, medicines to control neurological symptoms, nervous system related uh, diseases or illnesses.
And anti-venom is also a medicine which is produced from snake venom. They are important in research. Bottom line is, as they go, so shall we, right? The moment they are out of our place, pretty soon human or other animal groups also will be easily affected. What are the challenges? Why are they getting killed? I'm sure you all are aware of. Habitat loss is one major reason. Then there is always this pollution. There are forest fires, climate change, competition, and anthropogenic reasons such as road kills or just simply killing the snake. The snakes should not be killed. They have their own place in the ecosystem, just like the way we have our rights to live, they also should. So again, this is probably not the group because I'm sure you all are already aware as to how important snakes are. But yeah, we should do our best to preserve these animals. People hate them because of lack of awareness, appearance, but the most important aspect is bites. There are many again, as I've told you, there are snakes that have about 60 teeth in their mouth. And venomous snakes have additional fangs, specialized teeth that can deliver venom. Right here, this is the venom gland, and behind the venom gland, there is a compressor muzzle. So if a snake wants to inject venom, first it will bite, and then it will have to press that venom gland, press that compressor muzzle to send the venom. So sometimes there can be a venomous snake that could have bitten a person, but it could have chosen not to inject venom. In such situations, also people survive without any medication. These are called dry bites. Okay. But then, in case of a snake bite, always go to the hospital, and the doctors will kind of look at your symptoms and treat if required. Depending on the species, as I've told you, you can have neurological symptoms, or you can have uh, hem, I'm sorry, hematological symptoms. You can have bleeding at the bite site, swelling, redness, or basic lack of coordination, blurred vision, things like that. I will quickly run through this chapter. I don't think it's relevant here. But then, yeah, in case of a snake bite, remember this: do not panic, reassure the victim. Okay, give them confidence, tell them that all snake bites can be treated, do not worry, and take them to the nearest hospital. If possible, do not move that bitten area because if you move it much, blood circulation can increase, causing the venom to flow faster. So call for a vehicle, call for an ambulance, and reach the nearest hospital. Do not go to tantrics or babas. Most of the times they only give false remedies which never work. At this point in time, only hospital can cure snake bite. So it is always best to reach the nearest hospital in case of a snake bite. How soon? Probably in 1 hour's time. And finally, tell the doctor about the symptoms that are observed in the patient. That way, doctors can treat you based on the symptoms. So remember this mnemonic: do it right. RIGHT. R stands for reassure. I stands for immobilize. G stands for get. H stands for hospital, get to the hospital. T stands for tell the doctor about the symptoms. Do not have to kill the snake or and get the dead snake to the doctor. Do not have to tie a rope or a ligature stopping the blood flow. Do not have to cut the area, suck the venom, spit it out. Don't do all of that. Reach the hospital at the earliest, and the doctors will take care of you. The only treatment for snake bites would be anti-snake venom, which is found in most of the district government hospitals or multi-speciality private hospitals. How do you avoid snake bites? I'm sure you all are aware. Ensure that we should keep our surroundings clean. And if at all there are thick ornamental shrubs, please keep trimming them. If you're walking during the night time, use a torchlight in areas where there's not enough lighting. And if you keep your shoes or slippers outside, ensure that you're tapping them first before wearing them. And if at all you are spotting a snake, do not try capturing them. Contact your forest department. They will send someone to capture them. So these are things I'm sure you already are
are aware of, I thought I would sum it all up. So these are the common species that we may come across, and if we do, just maintain distance, and the snakes will not bother you. I hope it was informative. Any questions for me? Yes, yes, ma'am. I can take questions. Yeah, hi. Uh, as you have told about so many like thing like in case of snake bite, we need to go to hospital and get the tetanus injection. So, is there any alternative if suppose somebody is not being able to go to hospital, anything can be done like in Ayurveda or any home treatment that can be done? At this point in time, if it is a venomous snake, ma'am, there are no treatments in Ayurveda or homeopathy. The only treatment is there. Only treatment available is there in modern medicine, where anti-venom is used to treat snake bites. If it's a non-venomous snake, you don't have to worry much. If it's a venomous one, you'll have to reach the hospital. Okay, and you have spoken about the tetanus injection, but like I also study a little bit about these vaccines and injection, and there's a WHO site, World Health Organization site, where the data is available, which says like there are so many side effects also after taking tetanus injection. So, just in case I don't want to go through, suppose the snake is non-venomous, and I don't want to take tetanus injection also. So, See, if you are not pro-vaccination, that's your choice. Again, there can be various streams of thoughts with respect to the prevalence of tetanus in the ecosystem, tetanus around the world. Uh, if you choose to ignore, that's your choice. But a recommended guideline would be to take a TT shot, because sometimes these snakes end up eating rodents, right? Rodents that are burrowing in the ground. And if a snake ends up eating a rodent in the recent past, and if it were to bite you, then it is always better to be safe, is what I would recommend. okay, okay, but I think, sir, the it's a very and thank you for such a wonderful session. I never thought in such so much detail about like always thought that they are always very dangerous for our human lives. So ये जो आपने बताया अभी इसमें what should I what am I asking? तो फर्स्ट जो रिएक्शन जैसे आपने कहा तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस थिंग इन माइंड दैट नो वी नीड टू किल देम राइट क्योंकि पैनिक वाला भी सिचुएशन इज देयर ना पैनिक सिचुएशन इज देयर ऑल्दो इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग बट समटाइम्स पीपल आर लाइक अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया पीपल डोंट वांट टू लिसन दे जस्ट वांट टू नो गो हेड एंड टेक द शॉट और you know so it depends on mindset Agreed. also It and definitely is dependent on mindset. Again, I've told you, we've been working since 1995, and we hmm, continue to do around 300 awareness sessions covering 5 lakh individuals, and still it's not enough. hmm, लोगों का mindset जो है change करना बहुत मुश्किल है. There may be few individuals who will kind of come your way, but then there'll be a lot more who still are scared of snakes. But the right fact of the matter remains that if snakes are not there, even our own existence is challenging. अभी hmm, फिलहाल हम लोग रोडेंट से इतना मुश्किल झेल रहे हैं. Forget about the agriculture sector. वहां पे crops are destroyed, grains are destroyed. Forget those. Even in cities, rodents cause so much of problems, right from clogged drainage system to chewing of electrical wires, including car wires. ये hmm, rodents को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया है कि आप शॉप से मॉर्टिन रोडेंट किल ले लीजिएगा, रैट किल ले लीजिएगा, हर 6 महीने में वो मॉर्टिन रैट किल का पोटेंसी इंक्रीज कर रहा है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड करके दे आर ब्रिंगिंग आउट न्यू एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर पॉइजन्स टू कंट्रोल rodents, एंड इवेंचुअली दे आर गेटिंग immune टू इट ऑल्सो. ये कब तक करेंगे और कितना सस्टेनेबल है, कितना पैसे खर्च करके करेंगे? इन द लॉन्ग रन, ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट वी विल ओनली ट्राई टू फायर फाइट, बट if snakes are there, everything will be harmonious.
अगर ये मैसेज हम लोग लोगों को समझा सकें, एंड इफ इट ऑल देयर इज सम चेंज, देन वी विल बी एबल टू को एग्जिस्ट। आई एम नॉट सेइंग घर में ही सांप लगा लीजिएगा, लेकिन घर के बाहर ओपन एरिया में जंगल में सांप दिख गया, उनको मत मारिएगा, दे आर डूइंग देयर जॉब। Mm-hmm. So one more thing, are all the, like, you have been working since 1995, so you must be aware of the hospital thing. Do all the hospitals, they keep the anti-venom thing, or it's some specialized kind of center one need to go in such case? So In case, most of yeah. yeah, go ahead, yeah. So most of the times, again, uh, most of the major district hospitals, as in like the district government hospitals, right? They have antivenom and they treat snake bites. Even sometimes PHC level hospitals can treat snake bites. In our region, South India, Tamil Nadu, Karnataka, AP, Telangana, these areas, PHC simply refer to the district hospital because वहाँ पे ventilator का facilities रहेगा. All of these are options that are present. So they refer the patient to the district hospital. So district hospitals and any multi-speciality private hospital can treat snake bite. So And I would recommend that you can probably make a few phone calls to the hospitals nearby and find out if they are keeping anti-snake venom and if they can treat snake bites. That way it will be helpful to you. And sir, in case of snake bite, how much time, like, suppose the hospital is far away, or it is taking time for patient to reach the hospital. So between like life and death, I would just need to know ki, how much time, like it's a day time, or it Huh. like it happens in a very quick time. It will impact the health of a patient, or how does it go? Like, Yeah. suppose somebody is having, like, after few hours he gets that anti-venom, that is that okay, or it has to be like in an hour it Yes. has to be given, it's like that? Yeah. Yes. So that's a very important question, ma'am. In fact, anti-venom should be administered at the earliest. एक घंटे के अंदर आप पहुंच जाइएगा hospital, and the doctors will take some more time to do a few tests, and then they will administer anti-venom. Up to 3 hours also people go to hospitals and they do not have side effects. The longer you delay, there can be other complications. More than 3 hours, 3 to 6 hours, you can have some impact on the kidneys because the venom is constantly being processed by the kidneys, and in process the kidney cells get damaged, right? So try to reach as early as possible. Less than 1 hour would be ideal. Within 3 hours is still okay. But if you're delaying it more than 6 hours or 12 hours, then it can be risky. Depending on the species, death can happen. Cobras and kraits kill anywhere from 12 hours to 24 hours. Vipers, both Russell's and Soft-scale Viper, can take up to 48 hours or 72 hours also. But जितना डिले होगा उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्रीटमेंट देने के लिए. अच्छा सर, एक और बात बताइए, ये जो जैसे मूवीज वगैरह में आई हैव सीन दैट मुंह से झाग वगैरह निकलता है, इज इट दैट थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ डेडली स्नेक? नो मैम, यूजली डजंट हैपन. इट्स अ जो मिथ? फ्रॉथिंग, हाँ जी, जो भी फ्रॉथिंग होता है तो वो सिर्फ मूवीज में होता है. इन रियल लाइफ उतना नहीं होता है. इनफैक्ट इफ इट्स अ कोबरा बाइट, अ न्यूरोटॉक्सिक वेनम, if it's a cobra bite and towards the last stages when your voice box starts compressing against your esophagus, your food pipe, the Mm-hmm. saliva that is produced in the mouth may not go to your stomach. It may just simply ooze out from your mouth. That's about it. Frothing and all rarely happens. But is that the sign? Suppose the frothing happens, is that the sign also that the snake is harmful, right? Definitely it is. But then frothing happens, let's say, after 6 hours. Mm-hmm. First, first sign that you'll be looking at is bleeding at the bite site. जहां पे भी सांप काटेगा वहां से खून निकलेगा. दूसरा, Mm-hmm. एक आधे घंटे के अंदर जहां पे भी सांप काटा, जहरीला सांप हो, वो पर्टिकुलर एरिया का कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट विल बिकम डार्क, डार्क रेड, समटाइम्स पर्पल, समटाइम्स ब्लूइश कलर हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हुए सर का. एंड in like less than 1 hour there will be tremendous swelling at the bite site and you will have excruciating pain. ठीक है, ये सब क्रॉस होने के बाद आफ्टर 6 hours you will be having frothing. But I'm saying look at the first symptoms itself. The moment you see a snake bite, you should immediately reach Identity. the correct, Okay. reach the medical facility to take treatment.
And whom to in the hospital, is there specialized, are there specialized doctors in India to treat it, or a regular doctor can do it? A regular doctor can do it. The thing is, snake bite treatment is part of the curriculum of the medical students. Second year they have a chapter with respect to snake bite treatment. Sometimes doctors in the emergency center, they would have seen more snake bites, so they don't panic themselves and they kind of meticulously start the treatment. A doctor in the clinic may not be well prepared to handle a snake bite. They may not have the equipment to handle any reactions from antivenom, things like that. It's always best that you reach to the hospital, reach to the emergency department, and वहां से आपको जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वहां से स्टार्ट हो जाएगा. And would you like to recommend any particular brand also, yeah, for the anti-venom, or it is like any, like you're going to doctor and it depends on the doctor what kind of Yeah, anti-venom? any antivenom works, man. There are 4 or 5 companies that produce antivenom in India. Any brand works. No, it doesn't matter. If it's antivenom, it's good. And one shot is enough for that, right? No. So depending on the species, the dosage also changes. One small bottle of antivenom, one vial of antivenom is about 10 cc. Mm-hmm. For cobra, you might require anywhere from 5 to 10 vials. And for a viper, you may require anywhere from 20 to 30 vials also. They will keep giving it in specific dosages until the symptoms disappear. So your session was very, very like, I'm totally highly impressed, and it's good you're running this awareness campaign since long. So would you please? I would also like you to please share the PDF also. So sometimes people don't want to see the whole of the thing, na, but they can easily be aware by the PDF you have shared. Yeah, the Definitely, slides. definitely. Yeah, I would like to spread it further. Yeah. Sure, ma'am. In fact, most of the information is also available on our website. I will also include the link. You can get that information from there also. Yes. See, Yes. I skipped the images of snake bite victims because I don't know who my audience is. Uh, I don't know who all have joined. So I just skipped that part. If you want more details, you can get that from the website that I've posted in the chat. Okay, and one more, sir. Like I have worked with the educational institution also. So there's so many like teachers and educationists whom I know. So if they want to have some awareness session, would you be available like for some Definitely. meeting someday? Yeah. Yes, definitely, ma'am. We are there for that. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you for telling me in so much detail. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you so Thank you, much. ma'am. Any other questions? I'm sorry, I just saw messages regarding Telugu translation. I don't have any translation at this point in time. I have a poster in Telugu which I can share. Basically, పాముల పేర్లు తెలుగులో ఉండే పేర్లు అవన్నీ ఉన్నాయండి. అవి I'll share it with the organizer and you can probably get it from them. Thank you, Avinashi. I have a question. Yes, ma'am. So, do we have any national level help center to protect the snakes and all, like so that we can reach if we find any harm happening to the snakes? So, how we reach if we Okay. nearby we see any snake, or Okay. how we react? To whom we have to reach? Yeah. So snakes are state subject. So each state government is responsible to protect their wildlife. So snakes being wildlife are subject of the respective state. You can reach out to a particular state and they will help you out with this. I think some network issue, Avinashi. We are not able to hear you. Okay, you didn't hear my response? Yes. Okay. We didn't hear. Okay, I was saying that snakes are wildlife, and wildlife is part of the state ambit. Central government is one agency, and state government is one agency. You have centralized agency like the Ministry of Environment and Forests. You have specific bodies there, Central Zoo Authority and things like that. But if you are concerned about protection of snakes in your particular state, reach out to the state forest department and they will be able to help you out with it.
Acha, one more thing, like as a ALC, we are Authentic Light Center, we are some group of members. As a team, how we can help for your organization or for protecting snakes, in what way, in which way we can help you? You Can you can please certainly elaborate? spread the message, ma'am. Our aim is to kind of reduce the amount of snakes that are being killed and also protect human beings, right? Both are important for us, right? Not just snakes, even human beings are important. So we try our level best to spread awareness and protect both the groups. You can certainly support us by spreading our message. In our website, you will find all the IEC material, all the contents that I was sharing with you. It is present in our website. I've shared that link here in the chat. You can check all the content and probably spread this information. Yeah, I heard that your organization will be giving some training to the people who are Yes. interested, Yes. so that even they can involve, voluntarily they can Sure, do. sure. Sure, Yeah, definitely. can you elaborate on that, please? So we have a facility here in Hyderabad. If someone is able to access our Hyderabad facility, then we certainly can give them training. We have a place which is dedicated to house rescued snakes. We are operating that facility with the help of the Telangana Forest Department. So all our rescued snakes are kept there temporarily before they're released in the jungle. And in the meanwhile, we can train people all snakes that are present. Thank you, Avinash ji. Diksha ji, you can unmute yourself. Sir, thank you for such an informative session. Sir, I wanted to ask you one thing. I had a word with some kids, those who stay near the water. They have their house in the hometown near the water, and there they tend to find lot of, I think, aquatic snakes, which at times, take shelter in their fields and in their house. And when they are told that please don't kill the snakes, then they say कि हम ऐसा कैसे करें कि स्नेक को भी अपने घर में ही रहने दें. तो फॉर देम इट्स क्वाइट नेचुरल. आई शुड नॉट से नेचुरल. उनके लिए ना बस उनको एक यही रिसोर्ट दिखता है कि वी शुड किल द स्नेक. अब इस एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्विंस दैट पर्सन कि ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके साथ जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, even though they are very nicely educated, but still they resort to that method only in order to get rid of snakes. तो फिर ये रीजंस देने लगते हैं कि हमारे घर पे तो पेट्स भी हैं, अब स्नेक उस पेट को भी कुछ कर सकता है. एंड नाउ सी, वो जो पेट है, इट इज कैरिंग अ बेबी, तो नाउ दिस स्नेक कैन हार्म नॉट ओनली द पेट, इट्स बेबी प्लस एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स. तो मेरे को तो बहुत टफ लग रहा था कि कन्विंस करना कि दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड as a part. See, since they are a part of the creation by the nature, and every creature has a right to live. अब ये समझाना ना मेरे लिए बहुत ही टफ हो गया. तो ऐसी सिचुएशन को हाउ टू हैंडल. और ऐसा भी नहीं कि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप हमें दे रहे हैं. ये मेरे लिए तो न्यू है, क्योंकि मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती ही नहीं कि जहाँ पे मेरे आसपास ऐसे इतना वाइल्ड लाइफ हो. वाइल्ड लाइफ ये ऐसे वाला वहां पे दिखता है जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, या जिनके लोगों के बहुत बड़े फार्म्स होते हैं, या ऐसे लोग जिनके फार्म्स हैं मगर अब वो खुद सिटीज में रहते हैं, एंड वंस इन अ वाइल दे गो टू देयर होम टाउन टू स्टे एंड जस्ट हैव अ लुक एट देयर फील्ड्स. ये मुझे बहुत टफ लगा So समझाना. yes, ma'am. In fact, बढ़िया सवाल है. इनफैक्ट आप जो चैलेंज शेयर किए हैं, सच्ची में एक डिफिकल्ट चैलेंज है ओवरकम करने के लिए. अगर घर के अंदर सांप आ जाए तो डेफिनेटली निकालना पड़ेगा. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. नॉट जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, एज यू राइटली मेंशन्ड आउट, इवन आवर पेट्स और आवर किड्स, एनीवन इन आवर हाउस कैन बी एट रिस्क. माई पॉइंट इज, घर के अंदर डेफिनेटली अलाउ मत कीजिएगा. एट द सेम टाइम मेक सर्टन चेंजेस इन योर हाउस टू एंश्योर दैट नो स्नेक कम इनसाइड. फर्स्ट, कॉम्पाउंड वॉल अगर है, नहीं है तो एक कॉम्पाउंड वॉल रेडी कर लीजिएगा.
एंड कॉम्पाउंड वॉल में स्मूथ प्लास्टरिंग कीजिएगा सो दैट स्नेक्स डोंट कम इनसाइड. ओके. एंड एट द सेम टाइम गेट है, गेट के नीचे गैप ना रहे सर का देख लीजिएगा. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन सर्टेनली फॉलो. अब घर के बाहर जो जंगल है वहां का पॉपुलेशन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वहां पे स्नेक्स घूमेंगे, वहां पे स्नेक्स रहेंगे डेफिनेटली. वो सांपों को कुछ नहीं कर सकते, बट फ्रॉम विद इन आवर हाउस वी कैन ऑलवेज स्टे सेफ. This is something that you can share, but I also will understand if people are scared of them or if they hate them because of the proximity. ओके, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ हो गया था उस सिचुएशन को. मुझे लग रहा था कि वो जो स्टूडेंट मुझे एक रिप्लाई दे रहा था ना, वो बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक दे रहा था, और जो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी वो उसे इसलिए नहीं कन्विंस कर पा रहा था क्योंकि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहती. मेरे को वैसा एनवायरनमेंट कभी देखने को भी नहीं मिला. हम्म. नहीं, तो हमारा सर एनवायरनमेंट हमारा एनवायरनमेंट का एग्जांपल दूंगा. लोग जो है सांपों से डर के भागते हैं. हम लोग, मैं, मेरे वॉलंटियर्स हमेशा सांपों के पास जाते हैं, पकड़ते हैं, सुरक्षित छोड़ते हैं. इनफैक्ट मेरे घर के बाजू भी एक बड़ा स्कूल का कॉम्पाउंड है, बहुत सारे सांप हैं. हमारे कॉलोनी में, हमारे एरियाज में इतना अवेयरनेस आ चुका है कि अगर सांप बाहर घूम रहा है छोड़ देते हैं लोग. ठीक है, दे आर अवेयर दैट स्नेक्स आर डूइंग गुड टू द एनवायरनमेंट. विदाउट स्नेक्स जो हार्म होगा उसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं. जितना भी पैसे हम बर्बाद करें, इट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म. Again, try to ensure that there are mechanisms in place to avoid snakes coming into your house. Beyond your house, you don't need to kill it. They have their right. Let them live. तो सर मुझे एक ये क्वेश्चन करना है कि जैसे ऐसे नहीं लगता कि ये ज्यादा अवेयरनेस उन लोगों में होनी चाहिए जैसे जहाँ पे या तो कोस्टल एरियाज बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड सेकेंडली जहाँ पे कह लो कि अगर अभी भी हम जैसे साउथ में जाएं तो मैंने देखा है साउथ में सर अभी भी लोग लोग चाहे शहर में रह रहे हैं मगर साउथ में उनके बहुत बड़े लैंड्स हैं, और सही में वो साल में 2 या 3 बारी ही उसको देखने जाते हैं या उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते हैं. तो या तो उन लोगों तक जो फील्ड्स और उन सबको मैनेज करते हैं. तो क्योंकि हमारे पास वो अवेयरनेस होने का मुझे इतना कुछ वो नहीं लग रहा. इनफैक्ट उसको अवेयरनेस चाहिए जो उनसे डेली बेसिस पे वो उसको उनको हैंडल और डील करना पड़ रहा है. अग्रीड मैम. इनफैक्ट हम लोग करते रहते हैं, नॉट जस्ट इन सिटीज. वी ऑल्सो काइंड ऑफ गिव दी सेशंस इन विलेजेस एंड इवन इन रिमोट एरियाज. डेफिनेटली सबको अवेयरनेस जरूरी रहेगा. मेरे हिसाब से शायद उनको सांपों के बारे में और ज्यादा जानकारी हो देन दोज हु लिव इन सिटीज. ठीक है, पीपल हु आर हम्म. वर्किंग इन द फील्ड्स, दे उनका सुबह हो या रात हो सांप देखते रहते हैं हम लोग. ठीक है, दे हैव एन आइडिया क्या क्या सांप दिखते हैं, किन में जहर रहता है, किन में नहीं रहता है. दे आर एबल टू हैंडल दैट. इन सिटीज एंड अर्बन एरियाज क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो रहा है, एरियाज रैंडमली क्लियर कर दे रहे हैं. नो, देयर इज अ हम्म. लार्ज वेकेंट प्लॉट and invariably that is cleared and all of a sudden in the neighborhood you have a lot of snake sightings. मैं हैदराबाद का एग्जांपल दे रहा हूं अभी. दिस ईयर 2024 खत्म भी नहीं हुआ, ये साल हैदराबाद अलोन इन द सिटी वी एंडेड अप रेस्क्यूइंग अराउंड 12,000 स्नेक्स. ये हाँ. इतने सांप हमें विलेजेस में नहीं दिखते हैं. क्यों बोले तो वहां पे सांपों का एनवायरनमेंट सेफ है, सिक्योर है. स्नेक्स लिव इन दोज एरियाज कंफर्टेबली without even coming close to human beings. यहाँ पे क्या है, they don't have any more areas to move to and invariably come into human houses or अच्छा. come into conflict. बहुत snake bites होते हैं and that is why it is important that we plan our cities also properly. ठीक है, अगर नया एक टाउन डेवलप हो रहा है वहीं पे इको स्पेसेस को इंक्लूड करते सिटी भी डेवलप करना चाहिए जहाँ पे snakes have their space to live at the same time human beings are able to develop in a methodological fashion. It's a long struggle ma'am. हम लोग not just awareness, we also work with the government bringing a lot of policy changes. Yeah, it's like a multifaceted approach करना पड़ेगा and that is when I think long run में it will be a successful aspect. तो सर यू काइंडली शेयर द मतलब अगर हम आपका ऑर्गेनाइजेशन का नंबर लें और सपोज कि हम किसी और स्टेट में चाहते हैं कि साउथ में देयर शुड बी सच अ सेशन, तो कैन इट बी ऑर्गेनाइज्ड? Yes, ma'am. Yes. We do a lot of centers across India. In fact, आज afternoon there was a session we conducted for Delhi and UP location. ठीक है, बहुत सारे सेशंस करते हैं across India. This awareness is important. जो भी हो सांपों से अगर they are struggling, they should be aware as to what should be done and how can they coexist better.
हम लोग we are doing our bit. We have about 150 volunteers from various Okay. various walks of life. People are working, studying. सब लोग मिलके इकट्ठा होके we are trying to do our best. I'm sure most of you now will start spreading the message of conserving snakes. So yeah. No, definitely we will do that, sir. We will do that. And sir, if we want to donate some money to the organization as Yes, well, ma'am. so you Yes. kindly share those details with us. Sure, ma'am. All of that is there on the website, friendsofsnakes.org.in. Friends of Snakes Okay. search कीजिएगा, you should be getting that. Okay, sir. Okay. Thank Thank you you, so sir. much. Any other questions? मास्टर्स आपको किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दीदी आपको कुछ पूछना है? So Avinashi, so you're working from 1995, as you said. So Yes, ma'am. how is what are the statistics? So how how much it is helpful your work towards snakes? Is it relatable? Yes, ma'am. We are working for a good amount of time now. बहुत सारे लोग यहाँ पे call कर रहे हैं instead of killing snakes. Every day on our helpline we receive around 300 calls. ठीक है, on a daily basis. इतने सारे calls आते हैं from Telangana alone. एंड इतने सारे सांपों को मारने के बजाय लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हम लोग सुरक्षित पकड़ रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हम लोग जंगलों में भी छोड़ दे रहे हैं. Recognizing the amount of work that we are doing in the state, Telangana Forest Department also constructed a center, snake rescue center करके एक facility which is spread across 5 acres. हैदराबाद में सेटअप 2020 में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट करके दिए हैं. सो डिपार्टमेंट के साथ नॉट जस्ट तेलंगाना, एपी के साथ भी हम लोग मिलके वी आर काइंड ऑफ डूइंग आवर बेस्ट टू कंजर्व दीज एनिमल्स. तो हाँ, अभी हम नियर बाय कुछ सांप को देखे तो आप टोल फ्री नंबर को कॉल कर सकते Yeah, हैं, if you are है in ना? Telangana, AP, you can call our helpline, which is available 24/7. If you are from other states also, you can still call us. We will help you find a contact in your particular state. This information is there Oh. on our website, friendsofsnakes.org. So if we are from other states also, we can contact you. So Yeah, you we will do our best to find a local snake rescue organization in your state. okay. Thank you so much. All right, thank you all. I hope the session was informative. Thank you so much for the opportunity, everyone. 1 second, sir. Yes, ma'am. One more questions. Okay. Yeah, Yes, दीदी, मैम will. हाँ, निधि जी को पूछने दो, बाद में बोलते हैं. ठीक है. Sir, one more thing. Is there like you give some session also to how to catch it or how to rescue them? अभी आपने सारा बताया कि we need to call your team, but just in case like somebody is aware how to We rescue and how yes, to ma'am. We catch. train them. हमारे जो भी volunteers आते हैं उनको training हम देते हैं. Only thing is that it's a time-consuming process. Remember this, non-venomous snakes को manage कर सकते हैं. Venomous snake से अगर bite हो गया, then it can be dangerous. ठीक है, life threatening भी रह सकता है. तो हमारे volunteers को हम 6 महीने का training देते हैं. It's a free of cost training that we give to any individual who is wanting to learn about snake handling. They will have to come to our facility and we kind of give training to them on a weekly basis. हफ्ते में एक बार, usually Sundays रहता है, morning 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक different batches में हम लोग train करते हैं. लोगों के capacity के ऊपर dependent रहता है. Some might learn in 2 months, some might take 6 months also, because the fear, we do not want to force someone to kind of overcome that right away. Okay, it's a slow process. स्लो मूविंग नॉन वेनमस स्नेक से लेके वेनमस स्नेक्स तक ट्रेन करते हैं हम लोग. Sir, Mumbai, I'm here right now in Mumbai. So यहाँ पे या इसके आसपास कोई you have some center or Yes. number, any number you would Yes, give? there is one organization in Mumbai called SARP, SARRP, that you can reach out to, and they do a good job. Can you give the number also, contact number in the link, or Yeah, sure. I'll search for that and I'll share that with you. so directly we can call them in case of Yes, need. yes, yes. Yeah. Okay. Thank you.
Super. So I've posted that number on the chat. They have their office in Borivali. Any other questions? Yeah, you can unmute. Sir, I have a question. Yes, ma'am. That you said that, the moment you get a snake bite, you just contact doctor or either a hospital. But our first reaction is get panic. So what is the first aid one should do it actually? Okay. What is the immediate remedy one can follow? Yes. So, good question, ma'am. In case of a snake bite, no remedy is the best remedy. Do not try to rub the bite site. Do not apply hot water. पुराने जमाने में ब्लेड या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लगा के काट के जहर को सींच के थूक देते हैं. None of these things should be done. Do not tie a rope or a ligature. Okay. In case of a snake bite, all you need to do is get away from the snake. Okay. सांप से थोड़ा दूर आ जाइएगा. आपके दोस्त या फैमिली या फ्रेंड या एम्बुलेंस जो भी है जिसके पास भी गाड़ी हो, गाड़ी अरेंज करके नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा. And that's about it. Wherever possible, do not panic. It might be easy for me to say do not panic, but just remember that snake bites are treatable. अगर हम on time पहुंच जाएं without any challenge, snake bites को treat कर सकते हैं. अब तक मुझे my personal experience, I've been bitten by snakes 5 times, and none of them were dangerous. Every single time, in case it was a bad bite, I reached the hospital on time. I got anti-venom. I got treated also. Okay, just give them that confidence. Let them not run or exert themselves, and snake bites can be treated if you're following the right method that I was talking about. But do they fall asleep or any kind of reaction on your? They may fall asleep. Nowadays, doctors would treat you even if you're sleeping. ठीक है? पुराने जमाने में इनफैक्ट डॉक्टर्स छोड़ दीजिएगा, even relatives or friends भी सोने नहीं देते. Nowadays, they simply put a pulse oximeter on your finger. They will monitor all your vitals. You can continue to sleep during your treatment also. Just Great reach the knowledge. hospital on Thank you time. so much. Thank you so much. Wonderful session. Thank you, ma'am. Hello, Avinash ji. Yes, ma'am. Thank you so much for coming. मुझे समझो पूरा इंडिया में सबको कुछ एक नंबर देना है, 2 नंबर देने हैं, या स्टेट वाइज अगर किसी को मुझे समझाना है कि इस नंबर पर कॉल करके आप लोग स्नेक स्केचेस को कनेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? So, मैम, ये स्नेक्स का जो टॉपिक है, इट्स अ स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट. सो हर एक स्टेट में स्पेसिफिक ग्रुप्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में हम लोग काम करते हैं. दूसरे स्टेट्स में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं. सो देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक नंबर, अनफॉर्चुनेटली. If you are not sure, you can always ask the person to contact their forest department, या फिर डायल 100 ऑल्सो. यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग 100 डायल करते हैं और वहां से राउट होके हमें आ जाता है. So even the police department is aware who are the snake rescuers in that particular area. So call the forest department or the police department, they will be able to assist you. ओह, मतलब अगर स्नेक दिख रहा है तो 100 नंबर पर भी कॉल करके हम लोग किसी हाँ, ना किसी को snake, बुलवा हाँ सकते जी, हैं, हाँ इन जी. केस हमारे पास गुड, ये अच्छा. हाँ, Yeah, you can do इन that. केस और अगर हाँ हमारे पास हम्म, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो पुलिस को भी कंट्रोल रूम को करेक्ट, कॉल करके एक्चुअली. करेक्ट. यहाँ पे हमारे गुड यहाँ गुड. बहुत सारे कॉल्स 100 से कंट्रोल रूम से आता है हमें. बिकॉज इनवेरेबली इमरजेंसी है ना, तो पुलिस कंट्रोल रूम के पास भी इमरजेंसी नंबर्स रहते हैं. अगर आप प्रोएक्टिवली कुछ मेजर्स करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉल टू गेट राउटेड थ्रू 100 टू योर रेस्क्यूअर, please do a Google search, find out who are the organizations working in your area, or keep the number of your forest department. आपका स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हेल्पलाइन नंबर सेव करके लगा लीजिएगा. इन केस ऑफ स्नेक्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, आपको हेल्प मिलेगा. ओह ग्रेट ग्रेट. मतलब 1-2 नंबर भी अगर हम लोग
ग्रुप्स में रख रहे हैं कि इनकेस आपको कोई स्नेक दिख रहा है तो 100 नंबर है कंट्रोल रूम को या फॉरेस्ट को कॉल करके बोल सकते Yes, हैं। yes. इनकेस हमको पता नहीं है कि आजू बाजू में कौन है कौन नहीं है तो You can डायरेक्ट हम लोग contact us. फॉरेस्ट। या गुड गुड, ये You can बहुत contact us. We will help you find a number for a rescuer or an organization in your particular state. हम्म हम्म हम्म। और एक चीज ऐसी थी कि समझो आप ये बच्चों को पढ़ाने वाले हो तो ये कितने दिन का है, फीस कितनी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, सर्टिफिकेट्स रहते हैं क्या उसके, वो जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो एज एज ए सब प्रोफेशनल लेवल पर भी इसको कर सकते हैं क्या, कि उनका उसी से Correct. घर चले, ऐसा भी कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए, दो चीज यहाँ पे। एक हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी सेशन करते हैं। नो, आई काइंड ऑफ टीच herpetology एज अ सब्जेक्ट in a ओके। state government college here in Hyderabad. That is one thing. For those who want to get trained, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्नेक हैंडलिंग विल टेक टाइम, एज आई टोल्ड यू 6 मंथ्स तक लगेगा। हमारा जो सेशन यहाँ पे हैदराबाद में है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। whoever wants to get trained, they can come, simply get trained and go. हमारे ओर से थोड़ा वो फिल्टरिंग प्रोसेस रहेगा। वी वांट टू ओनली ट्रेन इंडिविजुअल्स हु हैव द राइट एटीट्यूड। यू डोंट वांट टू ट्रेन इंडिविजुअल हु वांट्स टू शो ऑफ विद अ स्नेक। स्नेक्स कैन बी रिस्की एनिमल्स। वो फिल्टरिंग प्रोसेस क्रॉस करने के बाद, इफ दे आर suitable, we train them for free. मतलब कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एनिमल्स के साथ बहुत प्यार है, लगाव है, उसको स्नेक अच्छे लगते हैं, तो वो एज ए प्रोफेशनल भी उसको कर सकते हैं। उसके, हाँ, देर आर, उसके लेवल पर वो घर घर को चला सकता है, इसका मतलब हाँ हाँ, मुझे, जरूर हाँ। जरूर। सो यू कैन बी अ स्नेक रेस्क्यूअर, यू कैन वर्क एट अ लोकल जू एज अ जू कीपर, रेप्टाइल एक्सपर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी फिलहाल सांपों में उतना जिज्ञासा नहीं है। प्रॉब्ली another हम्म 5 years, this one and environment related topics will come to the forefront. अभी यूएस में बहुत सारे जॉब्स है, स्पेसिफिकली सर्पेंटोलॉजिस्ट के पोस्ट के, लाइक स्नेक रिलेटेड का भी जॉब्स है यूएस में और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में। अभी इंडिया में ग्रो हो रहा है वो मार्केट। लॉट ऑफ ओके। places are now hiring a lot of herpetologists to kind of हम्म do these jobs. गुड। उसके लिए कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ, मतलब उन बच्चों को जो बच्चे स्नेक को बचाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है क्या? अगर अगर हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं, अगर कोई इंक्वायरी में है, या फिर यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं उसमें अगर किसी को एक को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती तो शायद मैं नेक्स्ट लेवल पर जाकर मेरे बच्चे के करियर के बारे में सोच सकती थी, तो वो करियर के My रिलेटेड भी हो सकता है हाँ, क्या? my opinion is, देखिए, snake catching is one thing anyone can learn. My opinion is to, if someone is that serious, let them pursue their education in line with snake conservation. बीएससी हम्म करने दीजिएगा जुआलॉजी में, एमएससी के लेवल में वाइल्ड लाइफ साइंसेस या हम्म हर्पेटोलॉजी का प्रोग्राम लेके कीजिएगा। एंड हम्म then it will become a viable career. हम्म Nowadays, not just snake catching, even research on snakes, is also an important emerging field. A lot of scientists do a lot of projects, not just in India, across the world, on snakes. वहाँ पे भी helpful रहेगा ये knowledge. So if someone is हम्म really interested to pursue it as a career, I would recommend them to finish their MSc in either wildlife biology or herpetology, and then get into animal handling. ओह हाँ। हम्म ओके सर, ये हो गया कि हम लोग स्कूल्स में जाकर ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस में कैसे रहना है, या ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, यू कैन सर्कुलेट अवेयरनेस पोस्टर्स टू द स्टूडेंट्स। घर में स्टिक कर सकते हैं या फिर स्कूल्स में स्टिक कर सकते हैं। बेसिकली सांपों के बारे में और जानकारी अगर पाएं, so they will kind of have this compassion towards snakes. Okay, as they grow up, as they become adults, they become responsible adults, and they would not kill a snake if they come across. And if these individuals are in a position of decision making, right, someone ends up becoming a forest officer, they will be able to हम्म protect these animals even better. हम्म 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 हम्म,
सी हमारे ओर से हम लोग ऑलवेज सपोर्ट करेंगे. यू कैन ऑलवेज राइट टू अस इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. But you have a way, you have a fair understanding as to how it works. People, if they are really interested in making it as a career, I would say back it with education. That way you'll be relevant to the field. बहुत सारा scientific advancements होते रहते हैं on a daily basis. If you kind of pursue that stream, you will have a longer or a better fruitful career. On the other hand, not just snake rescues, I think holistically अगर सोचें तो it will be better as a career. सर समझो ये पूरे वर्ल्ड में एक एक गांव में समझो हम लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी काइंड ऑफ गो टू दीज विलेजेस एंड डू अवेयरनेस सेशंस. हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, नॉट जस्ट द रेगुलर मीडिया, नॉट जस्ट द न्यूज़पेपर एंड द टेलीविजन, वी आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया. घर घर या गांव गांव में इंफॉर्मेशन जितना फास्ट सोशल मीडिया थ्रू जाता है, उतना हम फिजिकली जाके बात करें भी ना जाए. So we are doing a bit in social media. In fact, wherever possible, if you also can circulate materials related to snakes, महीने में एक बार या साल में एक बार सांपों के बारे में बात कीजिएगा और circulate some material on your social media handles. I'm sure it will have an impact. ओके. स्कूल्स में हम लोगों को जैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्नेक के बारे में जैसे अवेयरनेस आ रहा है ना सर आजकल, कि टाइगर को नहीं मार सकते, रूल बन रहे हैं, है ना? हाँ जी. वैसा स्कूल में से ही पेट मतलब उनके बुक्स में उसके लिए कुछ है क्या? कि मतलब गवर्नमेंट Yes. क्या कर रही है स्नेक को बचाने के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? और हम्म. ऊपर से हम लोग, ये सर पहले गवर्नमेंट का पूछ रही हूँ मैं. हम्म. हाँ, सो गवर्नमेंट कर रही है मैम ऑलरेडी. हर एक सांप, भारत देश में जो भी सांप दिखता है, हर एक सांप को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है, यू कैन नॉट किल एनी ओके. स्नेक, यू कैन नॉट कैप्चर एनी स्नेक विदाउट द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हम्म. Schools, depending on which curriculum it is, they are adding information on their curricula. They are talking a little bit of environment, importance of wildlife. If you ask me, more information on snakes also will be helpful. आपका आपके स्टेट में you can probably reach out to your district education officer and also urge them to circulate material pertaining to snake bites or snakes generally. That also will help. Whatever you're able to think, I think any action in this direction will always be helpful. जैसे ना बीच बीच में मतलब अभी भी बहुत अवेयरनेस है, और जैसे टाइगर को मारा जाता है समझो, या पीकॉक के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऐसा हुआ था बीच में. अभी भी इसलिए वो पीकॉक या टाइगर बहुत बढ़ गए कि एक भी टाइगर मरा है तो पूरा गांव के लोगों का छानबीन हो रहा है, किसने मारा था, क्यों मारा था, वो सब. वैसा स्नेक के बारे में होना चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट कोई नंबर है क्या? कि हम Ministry of लोग Environment. एक समझो रोड पर भी जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, किसी ने मार के फेंका हुआ है, फिर भी मुझे गवर्नमेंट को या पुलिस को या फॉरेस्ट को बताना है, हाँ, तो मुझे पुलिस को क्या इन्फॉर्म करना कीजिएगा. चाहिए? नहीं नहीं, इनकेस ओके. ऐसा हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा. दे पर विल पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्या कर केस. रही है, जैसे ना टाइगर के बारे में कंप्लीट इतना इतना स्ट्रिक्टली, टाइगर ही नहीं वाइल्ड एनिमल जो भी है, उनको अगर मारा गया है तो पूरा गांव का वो छानबीन करके कि किसने मारा था, इतना स्ट्रिक्ट ये किया है. उस तरह से हम स्नेक के बारे में उतना स्ट्रिक्टली वो रूल फॉलो हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और करना चाहिए. कोई कांटेक्ट नंबर है क्या कि आप हम कौन सा लोग स्टेट ये से, ज्यादा से ज्यादा? आप कौन सा महाराष्ट्र से. स्टेट से जुड़ रहे हैं? महाराष्ट्र. मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ओके. महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोल रही हूँ. हाँ, ओके, वो गांव में भी वही रहेगा तो मेट्रो सिटी में भी वही रूल रहना चाहिए ऐसा. अंडरस्टूड. रूल तो बहुत स्पष्ट है मैम. नो, टाइगर हो या सांप हो, हर एक जानवर का प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में. एक प्रॉब्लम ये है कि आपके घर के बाजू टाइगर नहीं दिखेगा. ठीक है, और लेट्स से अपने भारत देश में करीब 2000 या 3000 ही टाइगर रहेंगे. सांप ऑन द अदर हैंड लाखों में रहते हैं और घर में आ जाते हैं. नो, सब जगह दिख जाते हैं. दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एनफोर्स दीज थिंग्स. नो, हम्म. पीपल कैन सिंपली किल देम एंड से सेल्फ डिफेंस में मार दिए, क्या कर सकते हैं करके. ठीक है, हम्म. उसी एक चीज की वजह से बहुत
मुश्किल होता है, इंस्टेड ऑफ scaring people with punishments, we also should touch about the impacts or benefits of snakes. आपके ओर से प्रॉब्ली आप आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर लगा लीजिएगा। आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करके एक इंडिविजुअल रहेंगे, हेड ऑफ योर स्टेट, हु हैंडल्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिलेटेड मैटर्स। इफ एट ऑल यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स, प्लीज कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल प्रोवाइड सपोर्ट। हमको ऐसा लग रहा है सर कि फार्मर्स है जो स्नेक को बहुत ज्यादा मार रहे हैं, पर फिर भी फार्मर्स में थोड़ा सा वो अवेयरनेस है शायद कि सारे सांप मारने की जरूरत नहीं है, और उनके अंदर इतना डर भी नहीं रहता है क्योंकि रोज देख रहे हैं ना, उसको रोज ही देखते हैं। हाँ, उनको पता भी है कि वो वहां पे स्नेक का घर है, उनको पता भी है, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते उनको। ये सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये सिटीज में ही ज्यादा इशू हो रहा है, जिसको दिखता है वो डायरेक्ट मारने को ये करते हैं। गांव में भी मार रहे हैं क्या? मारते होंगे, कम फिर भी रहता होगा। कम रहता होगा, पर सिटी में ज्यादा हो रहा है। अग्री मैम, अग्री। देखिए, इट्स लाइक ये सांपों के विषय में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सब्जेक्ट। नो, इट्स नॉट लाइक अ सिंपल थिंग। सांपों में इतना प्रॉब्लम है कि सांपों की वजह से आदमी मर रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, अराउंड 60 to 70,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट्स ऑन एन ईयरली बेसिस, ठीक है। हम्म ऑन द अदर हैंड, लेट्स से टाइगर ले लीजिएगा, साल में एक या दो टाइगर रिलेटेड डेथ्स हो, ज्यादा है, ठीक है। आपको हम्म। डिफरेंस पता चल रहा है ना, इतने सारे लोग नहीं, पर सांपों वो से मर रहे हैं। वो डायरेक्ट वो जो टाइगर का मेन मेन माइंड सेट ऐसा नहीं है ना कि इंसान को मारना है। वो सिर्फ कोई अगर सामने आकर कुछ नॉट एबल टू हियर यू मैम। हो रहा है ना, इसकी वजह से। दीदी हाँ, बीच में आपका आवाज करेक्ट। कट हो गया था, आपका क्वेश्चन। हाँ लास्ट मैं, 10 या 20 सेकेंड्स। हाँ, जैसे ना वाइल्ड एनिमल जो है ना, जो वो उनका कैसे है ना कि उनको कोई मारने को आ रहा है तो हमला हो रहा है जानबूझकर। कोई भी जानबूझकर इंसान के पास नहीं आ रहे हैं। पर स्नेक का क्या हो रहा है ना, वो अंधेरे में भी कोई उसको क्रॉस करके जा रहा है तो भी वो बाइट कर रहा है, क्योंकि उसको सेंस है, उसको सेंस, उसको वाइब्रेशन फील होती है ना। वो जल्दी नजदीक आकर बचाने की, कुछ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा मर रहे होंगे लोग। पर हो सकता है कि वो जानबूझकर। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट मैम। मेरे हिसाब से सांप भी डेफिनेटली जानबूझ के तो नहीं मार रहे हैं टाइगर जैसा। अपने सोसाइटी में सिचुएशन ऐसा है कि सांप सब जगह है, ठीक है। इन हम्म सांपों से बहुत सारा स्नेक बाइट्स हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट्स, ठीक है। ये जो सिस्टम है, इट हैज टू काइंड ऑफ कम फ्रॉम ऑल एंगल्स, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट यू, इवन द गवर्नमेंट शुड स्टेप अप। We are kind of हम्म pushing for better compensation of snake bites across our state. In case someone dies because of a tiger, they give compensation of 20 lakhs. Snake bites के हम्म लिए most of the states in India, zero. If someone were to die because of a snake bite, it's a zero from the government side. So, and then in case of snake bite, even the treatment sometimes in private hospital is costly. 1 लाख तक होगा in case of a viper bite, 1 से लेके 2 लाख तक हो सकता है। So all of these are things that we'll have to factor in. See, लोग जानबूझ के सांपों को मार रहे हैं, we will have to certainly take action. और हम्म जो लोग एक्सीडेंटली मार रहे हैं, गाड़ी के नीचे आके कुचल जा रहा है, we really cannot do much in those situations also. हम्म So it's a long term process, ma'am. I think हम्म। together I think we should find a solution for it. और सर मुझे और एक पूछना था, समझो स्नेक की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, वो सच में पॉइजन बॉडी में जाने की वजह से मर रहे हैं कि डर है? डर की वजह से कोई भी नहीं मरता मैम। डर की वजह से शायद आप बेहोश हो सकते हो, एक 5 मिनट के बाद आप वापस आ सकते हो, ठीक है। सांप काटने के बाद जहर की वजह से ऑर्गन्स फेल होके लोग मरते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों में सच लोग में बोलते हैं कि सर आप ये हुआ ओके।
कट हुआ था फिर से। कटवा। हाँ जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सांप के डर से लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, वो सब सच नहीं है। सांप के डर से शायद कोई बंदा बेहोश हो सकता है। हार्ट हम्म। अटैक आना, ऑल ऑफ दैट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द पीपल डाई बिकॉज ऑफ द वेनम ऑफ द स्नेक। सांप ओके। या तो रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकता है, या रीनल फेलियर कॉज करता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर जान हम्म। गंवा सकते हैं लोग। ओके। थैंक यू सर। हम शायद बहुत बहुत हेल्प की जरूरत है आपकी। डेफिनेटली इसके मैम, वी आर बाद ऑलवेज भी देयर फॉर यू। हम्म और इसके बाद भी जितने समझो हमारे पूरे ग्रुप में 1000 2000 करीब करीब लोग हैं। शायद आपके इस सेशन की वजह से जितने इंसान, जितने लोग, जितना इस ग्रुप में लोग सुन रहे हैं ना, वो इतने भी स्नेक अगर बच रहे हैं आपके एक सेशन की वजह से, तो बहुत बड़ा चेंज रहेगा वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इतना, सो हाँ, मच। इतना टाइम निकाले हमारे लिए। माय फिर प्लेजर। से फिर से सर प्लीज इसके बाद भी हो सकता है कुछ इंक्वायरी रहे, हमको गाइड करते रहना। डेफिनेटली मैम। और एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड वाइड ये जो सिस्टम है वो 2000 3000 जो भी लोग हमारे ग्रुप में है, वो सारे के सारे लोग अब काम करना चाहते हैं कि स्नेक को बचाना है। तो उसके लिए हो सकता है कि कोई दूसरे कंट्री से, हो सकता है कि कोई कहीं से वो आपको कांटेक्ट नंबर मांगे, तो आपके पास वैसा कुछ है क्या सर? ऐसा कुछ लिस्ट है क्या कि हम पूरे ग्रुप में उसको शेयर कर सके कि ये लोग अवेलेबल है स्नेक के बारे में? सिर्फ स्नेक को पकड़ने के लिए नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए भी वो आपकी जगह में आकर, स्कूल में आकर इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हाँ जी, आई विल सिर्फ शेयर बच्चों दैट को नहीं, नंबर। हाँ, सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि पूरा जहां पर भी वो चाहे तो ऐसे एक, नॉट एक्चुअली एक नंबर, पर जितने जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना हम लोग ग्रुप में दे सकते हैं क्या? और हाँ जी, अगर दे ऐसा सकते है हैं। तो हम्म आप हमारा वेबसाइट जो है वो शेयर कर दीजिएगा। उसी में आपको कॉन्टेक्ट अस का पेज रहेगा। दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन, स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं हमारे वेबसाइट के तहत रीच आउट कर सकते हैं, एंड वी विल हैव हम्म आवर पर्सन्स लुक एट इट। डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज, वी विल सर्टेनली सपोर्ट। ओके। ओके। हम्म आई हैव शेयर्ड हम्म द इंफॉर्मेशन इन द चैट फॉर योर। हम्म सर, आप जैसे समझो कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हो, तो हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम और ज्यादा बढ़े? ये पेड रहेंगे क्या? कितना, कैसे कितना पेड रहेगा? अगर समझो आप जिस सिटी में हो, उसके अलावा आप सिटी के बाहर जाकर ये करेंगे, समझो उनका आपको बुलाया जाएगा, तो क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा बता देंगे क्या? इनकेस आप अवेलेबल होंगे तो आजू बाजू के लोग आपको बुला सकते हैं क्या कि हाँ ज्यादा जी। से ज्यादा स्नेक्स को बचाया जाए? हाँ जी। ये स्नेक्स अवेयरनेस रिलेटेड वर्कशॉप्स करने के लिए आपको यहाँ पे चैट में नंबर डाल चुका हूँ, स्नेक अवेयरनेस करके। 8374233377 कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे कोऑर्डिनेटर आपका मदद करेंगे वहाँ पे। नॉट जस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अगेन आई टोल्ड यू वी आल्सो डू रिसर्च ऑन स्नेक्स। सिर्फ सांपों का अवेयरनेस ही नहीं, हम सांपों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स भी पब्लिश कर चुके हैं। We work हम्म with various agencies, WII, CCMB, across India, and also from other agencies across the globe, in kind of doing a lot of creating a lot of awareness about snakes. So, if you need any specific information, ma'am, ये number पे call कीजिएगा. We will certainly support you. सपोर्ट मतलब क्या? कोई क्वेश्चन Uh, से भी ज्यादा रिलेटेड हमको ये चीज है सर कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाना है, बहुत Understood. ज्यादा प्रोग्राम होने चाहिए। आप अकेले शायद उसको ना हैंडल कर पाए, तो आपके पास कितने लोग हैं कि जहां पर भी बुलाओगे तो बहुत ज्यादा वेटिंग ना हो, बहुत ज्यादा हमारे वेटिंग ना पास हो? बहुत लिमिटेड लोग हैं मैम, अबाउट हम्म 150 मेंबर्स हैं। लेकिन हम्म उनमें भी ये अवेयरनेस बात करने का, अगेन लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। फ्यू पीपल कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन ओनली स्पीक इन तेलुगु और तमिल और हिंदी।
So depending on your requirement, we will try our level best to support you. ठीक है, ओके। आप सूरज से कांटेक्ट कीजिएगा, स्नेक अवेयरनेस का नंबर यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ चैट पे. He will try to help you the best way he can. Arranging members to conduct awareness programs and things like that. He can certainly support. सर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोनेशन देना चाहता है तो या हमारा वेबसाइट डोनेशन में ना लिंक. देते हुए अगर कोई ये चाहता है कि स्नेक से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे या कुछ भी जो भी, जरूर तो जरूर. आप क्या 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 वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहेंगे या क्या है जो नॉर्मल लोग आप तक पहुंचा सकते हैं? देखिए और मैम, ये हमारा सर जैसे जैसे आपका अवेयरनेस का प्रोग्राम बढ़ाते रहेंगे, मतलब आप ऐसा समझो सर कि 2000 लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ जी. आप उनको सिर्फ डोनेशन के रूप में सिर्फ पैसे देने हैं कि वो कुछ इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए कि आपकी समझो आने जाने का खर्चा है कि क्या किस तरह से हम लोग आपको मदद कर सकते हैं? हाँ जी. तो हमारा फैसिलिटी जो है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 100 से लेके 200 स्नेक्स हाउस करके रहते हैं. हम्म। वी हैव स्नेक्स इन नो डिफरेंट एनक्लोजर्स. एक सेटअप यस यस। रहता है जहाँ पे हम्म सांपों को स्पीशीज के मुताबिक, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के मुताबिक लगा के रहते हैं वहाँ पे. प्रोवाइड देम विद फूड, वी प्रोवाइड देम विद वाटर, राइट टेम्परेचर, हम्म सब वहाँ पे मेंटेन करते हैं. हम्म Now this is like a typical office setup भी सोच लीजिएगा. Whatever things you feel will support, you can always give. Right from it can be as small as a cooler से लेके, it can be paper or some material, whatever you think will support, you can always give. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज में, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस जो पेज है वहाँ पे कॉल, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा. हम्म। If it is an item that we can certainly use, we will let you know and we can certainly send it across. You can always सर donate in cash or kind. It's up to you. और एक ये था जानकारी चाहिए थी कि समझो हम लोग लोकल में ऐसे ही कोई है, तो उनको किसी को भी कॉल कर सकते हैं क्या? वो हर कोई स्नेक का करेक्ट उसको फॉरेस्ट में Correct. ही छोड़ते हैं कि वो That's the right thing, कभी ma'am. ऐसा हो सकता है क्या कि वो लोग गलत गलत उसको कुछ ऐसा देखिए स्नेक को? महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सर्प मित्र है वहाँ पे. हर एक हाँ। बंदा इंडिविजुअल बंदा है. एंड इनवेरिएबली क्या है, इंडिविजुअली इंडिविजुअली करते हैं. एज इन लाइक डिपार्टमेंट के साथ टाई अप नहीं रहता है. हम्म। and शाम को नहीं है। टीक से पकड़ते हैं, या फिर स्नेक बाइट्स हो सकता है उन लोगों को, या फिर कहाँ पे छोड़ रहे हैं, सब थोड़े डाउट्स रहते हैं. हम्म मेरा सलाह ये है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिएगा. जो भी बंदे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेजता है, दे विल बी ऑथराइज्ड इंडिविजुअल टू सेफली हैंडल. बिकॉज सांप पकड़ना हम्म एक चीज है, विदाउट इंजरी पकड़ना एक चीज है, सांप से न कटवाना दूसरा चीज है. योर हम्म पर्सनल सेफ्टी, हमारा पर्सनल सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगेन आई एम टेलिंग 95 से हम लोग काम कर रहे हैं. नॉट अ सिंगल पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द हम्म अदर हैंड, महाराष्ट्र में इतने सारे सर्प मित्रों का स्नेक बाइट्स होता देखते हैं हम लोग. हम्म सांपों के साथ नो स्टंट्स हम्म करना, हम्म वो सब जरूरी हम्म नहीं है. स्नेक्स शुड बी हम्म रेस्पेक्टेड. हम्म ये इंडिविजुअल्स फोटोज के वास्ते या सोशल मीडिया के वास्ते हम्म करते हम्म हैं. हम्म आई वुड हम्म recommend contact the forest department, let them help you in finding the right individual. And the third aspect which I forgot is the relocation. Proper हम्म। जंगल में छोड़ना हाँ पड़ेगा. एक्चुअली पानी का यस। पानी का सांप को रेती में नहीं छोड़ सकते हैं. रेती वाला सांप को पानी के अंदर नहीं डाल सकते हैं. गुड करेक्ट टाइम पे छोड़ना पड़ेगा. ऐसे गुड। जगह पे छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे वो सांप मिलता है. ऐसा नहीं है कि हम्म दूसरे अननोन जगह में छोड़ देंगे. वो सब बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं. इट इज बेटर दैट यू कॉन्टैक्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. हम्म। मतलब हम किसी को भी ये सब करने के लिए ना बोले, नहीं तो वो स्नेक मतलब नॉट इन करेक्ट हैंड। Yeah, there are a lot of people पैसों के वास्ते बहुत सारे लोग स्नेक कैचिंग करते हैं. आई वुड रिकमेंड, इट इज बेस्ट दैट यू रीच आउट टू योर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ऑथराइज्ड स्नेक रेस्क्यूअर्स जो हैं, उनका हेल्प लीजिएगा. दैट वे द स्नेक इज सेफ एंड द पर्सन ऑल्सो इज सेफ. ठीक है, हमारे हाँ। घर में आके ऑल ऑफ सडन उनको स्नेक बाइट हो जाए, रेस्क्यूअर को स्नेक बाइट हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, राइट? सो रीच हम्म। आउट टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. इनके पास कुछ सर्टिफिकेट होनी चाहिए? हमको क्या देखना चाहिए कि वो लोग करेक्ट है?
या कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ आईडी रहती है गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से हाँ कि ये ऑथराइज है, ऐसा मतलब हम उनको कैसे रिकग्नाइज करें कि ये करेक्ट है? हाँ जी। सो बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, हर एक स्टेट एक एक पॉलिसी निकालता है इसके बारे में। महाराष्ट्र में इंडिविजुअल शुड हैव अ आईडी कार्ड, एज फार एज आई नो। अभी है कि नहीं है, नहीं मालूम मुझे, बट जनरली आईडी कार्ड्स रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूड आईडी कार्ड्स रहते हैं। थोड़ी जगहों पे लेटर रहता है, सर्टिफिकेट रहता है। हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को परमिट्स रहता है। सांप जो है पकड़ नहीं सकते हैं विदाउट परमिट्स। सो हमारे यहाँ ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज परमिटेड टू हैंडल स्नेक्स, हाउस हम्म। स्नेक्स, हर एक अलग अलग परमिशन रहेगा। हम लोग जो है फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी विल इशू आईडी कार्ड्स टू ऑथराइज्ड स्नेक रेस्क्यूअर्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। हम्म। आपके जगह पे मे बी डायरेक्ट लाइसेंस रहता होगा या फिर सर्टिफिकेट्स रहता होगा। दिस इज अ हम्म। स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आई थिंक वी शुड चेक विद योर स्टेट गवर्नमेंट हाउ इज इट रन। हाँ, आप कि सर आप ऐसा कर सकते हो क्या कि पूरे स्टेट लेवल के लोगों के फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नंबर दे सकते हो क्या? आपके पास रहेंगे वैसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट में रहता है मैम जनरली। वेबसाइट में? क्या है, ओके ओके। हाँ, गो टू महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट अस पेज में एक हम्म। सेंट्रलाइज नंबर रहेगा। हम्म। वही हेल्पलाइन नंबर या जो भी यस सेंट्रलाइज नंबर यस। है, हम्म। यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। उनका डायरेक्टरीज भी डालते हैं एक आध बार, कैन गेट योर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू सो मच। हम फिर से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस फैले। जरूर जरूर। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू और कुछ एवरीवन क्वेश्चंस है क्या? फॉर, या एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। किसी ने हैंड? यस, यस। रियल मी। यस प्लीज। Yes. यस। Sir, I have a question. Suppose for a younger children, how will you explain them? You have showed us those screen. So how do you go about it? What level like? Is it going to be in a story form or how does it work? Yes, ma'am. So we have various kind of audience that we kind of come across, right from tiny toddlers to adults. सो बच्चों को जब जनरली बहुत ही छोटे बच्चे हैं, समटाइम्स वी आल्सो गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम नर्सरीज, ठीक है ना। प्री केजी भी नहीं, प्रॉब्ली 5 ईयर ओल्ड किड्स, 6 ईयर ओल्ड किड्स, उनमें उतना रिटेंशन कैपेसिटी नहीं रहेगा। वी काइंड ऑफ मेक इट सिंग सॉन्ग फैशन, वी टॉक अबाउट द कलर ऑफ स्नेक्स, वी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, वी ओनली कॉल इट अ ब्राउन स्नेक और अ ग्रीन स्नेक एंड थिंग्स लाइक दैट। उनके हिसाब से वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज एनिमल्स, ठीक है। As and when they grow up, that curiosity may increase. We only try to touch on that aspect. As and when the grades increase, depending on which grade these students are, we kind of increase the complexity. We also conduct sessions for PhD students. उनका जो scientific temper रहेगा वो अलग ही रहेगा, and our sessions are also catered to that. So do you use a play card or how does it work? Like how you showed So us yeah, the we kind of have posters sometimes with snakes, and depending on the availability of snake soft toys, that also can be used depending on the school that we are talking about. बहुत ही छोटे बच्चों को avoid ही करते हैं. We don't want to kind of scare them all of a sudden. And if a school is really interested, only then we kind of conduct these workshops. Okay, thank you so When much, I sir. was a kid, ma'am, I kind of came across this snake awareness session when I was in second grade. ठीक है ना, फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के मेंबर्स आए थे, दे डिड एन अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड सेकंड क्लास में, सेकंड ग्रेड में ये सेशन देख के आई वाज इंटरेस्टेड एंड आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट स्नेक्स, एंड नाउ आई एम हियर. सो यू कैन इमेजिन यंग किड्स में, इफ यू काइंड ऑफ ब्रिंग इन दिस सांपों का एस्पेक्ट, दे कैन काइंड ऑफ बी इंडिविजुअल्स हु लव और लव स्नेक्स और वाइल्ड लाइफ. Yeah, thank you so much. Thank you. हाँ प्रिया जी, आप बात कर सकते हैं।
नमस्ते सर। एक्चुअली नमस्ते। सर मैंने लैब ज्वाइन किया है, पर मुझे ना ये सेशन बाद में सुनिए। मुझे और एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कोकण गांव में, कोकण के इधर दो सांप जाति के प्रकार के मिलते हैं। एक मनेरे है और एक कांडर। ये दो सांप उन वहां पे मान्यता है कि वो अगर दो सांप है ना, एक ही दिन काटने के बाद एक ही दिन में इंसान मर जाते हैं। मतलब अगर रात में काटा है तो सुबह सुबह नहीं देखता है वो, सुबह में काटा तो रात नहीं देखते लोग। और वो ना बाइट नहीं करते, मतलब सिर्फ उनके टंग से लिक करते हैं, जिससे वो जो पॉइजन है वो चढ़ जाता है। तो मुझे ना इन दो सांपों के बारे में अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए ये लोगों में। सांपों का नाम फिर से बोलिएगा एक मारी बार। मारी देते हैं। सांपों का नाम बोलिएगा फिर से। मनेरे मनेरे और कांडर। मनियार बोलना है क्या? मनियार। मन्यार, हाँ ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे भी याद नहीं है। कांडर करके भी है। वो सिर्फ बाइट नहीं करते, लिक करते, और एक ही ओके, दिन में मर जाता है इंसान। ठीक है। आप जो सांप के बारे में बोल रहे हैं बेसिकली एक कॉमन करेट है। नो, हिंदी में उसे करेत बोल के नाम से भी बुलाते हैं, कंदर करेत। तो ये जो सांप है ओके। काला रंग का सांप रहेगा, रात के टाइम में जनरली दिखता है ये सांप। उसका हम्म। क्या है, सांप काटने के बाद आदमी 12 घंटा या 24 घंटे में मर सकता है अगर ट्रीटमेंट ना ले। वो सांप के बारे में मैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बात कर रहा था। उसका क्या है, जहर जो है स्पेसिफिकली न्यूरोटॉक्सिक जहर है जो सर आपका सूजन। आवाज, हाँ, आवाज कट हो गया था, फिर से। हाँ जी। तो आप जो सांप बोल रहे हैं शायद करेत नाम का सांप होगा। प्रेजेंटेशन एक बार फिर से देखिएगा। ब्लैक स्नेक, काला रंग का सांप, और उसके ऊपर सफेद लकीर मिलते हैं। ठीक है, ये सांप जो है रात के टाइम में एक्टिव रहेगा और उसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर रहेगा। नस पे प्रभाव दिखाने वाला जहर रहेगा। ये सांप जी। हो सकता है जो आप 12 घंटे में मरते हैं बल्कि आप जो बोल रहे हैं, शायद यही सांप होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जरूर बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि रात में किसी को सांप डस दे और सुबह के टाइम तक आदमी जो है जान गंवा सकता है। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम्म। है। माय रिक्वेस्ट इज, जनरली गांव में जब भी हम सोते हैं जमीन पे ना सोएं, एक पलंग या फिर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में सो जाएं। और अगर जमीन पे सोना ही है तो एक मच्छरदानी ओढ़ के सोएं, डायरेक्ट ग्राउंड में ना सोए। समटाइम्स सांप जो है हमारे बिस्तर के पास आ सकता है, हमारे बाजू में आके सो सकता है। नींद में अगर हम हाथ या पांव लगा दें तब काटने का चांसेस है। ये सांप अगर बाय चांस काट दें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा और वहां पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। एंटीवेनम ले लीजिएगा और उसका भी ट्रीटमेंट मिलेगा। जी। एक्चुअली वो सांप पे ना काटने के निशान नहीं रहता है उसमें। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं बोलना भूल गया। याद लगा लीजिएगा, जो भी सांप जो भी हानि पहुंचाना है काटने के बाद ही पहुंचा सकता है। सिर्फ जीभ से अगर टच कर दे कुछ ना नहीं होगा। सांप में हाँ। जो है विष ग्रंथ रहता है, वेनम ग्लैंड रहता है। वेनम ग्लैंड में जो जहर है विष दंत के मदद से हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ही प्रभाव कर सकता है। सिर्फ जीभ से अगर अगर टच कर दें या फिर सांस हमारे ऊपर आ जाए, कुछ नहीं होगा हमें। अगर विष हम्म। विष 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 सर्प अगर हम काट दें, हमें काट दें, तभी उसका प्रभाव रहेगा। ये सांप का जो विष दंत है बहुत छोटा रहेगा। समटाइम्स हम कांटा कांटा करके हम इग्नोर कर सकते हैं, स्पेशली गांव में जब हार्डकोर लाइफस्टाइल रहता है। वी मे मिस्टेक इट एज अ थॉर्न और एन इंसेक्ट बाइट। चींटी या फिर छोटा इंसेक्ट काट करके हम इग्नोर कर सकते हैं। हम्म। बट आई वुड रेकमेंड दैट यू ऑलवेज बी वॉचफुल। अगर कुछ दर्द हो, गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर जहरीला सांप हो, विषदंत रहेंगे, विषदंत के डॉट्स रहेंगे और वहां से खून भी थोड़ा बहुत बहेगा। ओके, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। माय प्लेजर मैम। All right. If there are no doubts, I will conclude this session. I hope it यस सर, was थैंक informative यू। यस for यस, all. एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी सर। थैंक यू। ये जो आपने पुलिस का बोला वो बहुत, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी कि हम करेक्ट करेक्ट स्नेक स्केचेस के
पास पहुंचे और एयर फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास। हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, All right, थैंक ma'am. यू Thank सो you, मच, everyone. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव My यू, pleasure. थैंक यू My सो pleasure. मच, यस, थैंक यू। यस स्वाति जी, उसको क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you, मास्टर्स, Avinashi. लव यू। Thank you, Avinashi. Thank you so much for your यस valuable information. We will keep in touch to take this यस moment further. We hope you will be supporting us. यस यस, Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच।